Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students and other fellow listeners, hope that you all are feeling well. Let us have a debate on entitled theme Identification of Visually Impaired Children. Visually impaired children are those children who possesses defect or deformity in the sense of sight. Now question arises, how we will identify visually impaired children? Dear students, there are various methods and assessment techniques by which we can identify various sensory defective children, such as defect in the sense of sight, defect in the sense of hearing, so on and so forth. Now, in today's lecture, we will discuss how we will observe or identify visually impaired children. Number 1. Newborn screening. Newborn screening is that screening which is conducted after the birth of a child. यानी कि बर्थ के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन बच्चे का होता है in order to check the various senses of the child. For instance, eye screening, hearing screening is conducted in order to know whether child possesses normal senses or not. अगर बच्चे में कोई इश्यू है eyesight में, it means that it is the indication for visual impairment. If there is any problem lies in the sense of hearing, so it is the indication for the hearing impairment. इसीलिए बर्थ के बाद बच्चे के वेरियस टेस्ट्स कंडक्ट किए जाते हैं, such as blood tests, heart screening, eye screening, ear screening, in order to know overall health of the child. Number 2. Pediatric checkups. Pediatrics is that branch of medicine which deals to study the overall health of the child. बच्चे का डीप मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है in order to check the child's health. ब्लड टेस्ट्स कंडक्ट किए जाते हैं, हार्ट टेस्ट्स कंडक्ट किए जाते हैं, ईयर स्क्रीनिंग होती है, आई स्क्रीनिंग होती है, किडनी टेस्ट्स किए जाते हैं, लिवर का टेस्ट किया जाता है. बाय एंड लार्ज बच्चे का वेट चेक किया जाता है बाय वेरियस स्पेशलिस्ट्स और कंसर्न्ड डॉक्टर्स as per the medical diagnostic management is concerned. पीडियाट्रिशियंस का काम है कि वो डिफरेंट हेल्थ टेस्ट्स बच्चे का चेक कर ले in order to identify various types of problems or health related issues pertained by the child during the infancy period or during the childhood stage. Number 3. Parental observation. Parents may notice signs such as lack of eye contact, unusual eye movements, excessive tearing, eye rubbing, or difficulty tracing objects. The parents can play important role in order to notice the overall behavior of the child. ये responsibility है पेरेंट्स की, वो बच्चों के बिहेवियर को नोटिस कर ले. क्या बच्चे सही तरीके से अपने सेंसेस का इस्तेमाल कर पाते हैं कि नहीं, बच्चे के एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो है वो नॉर्मल है कि नहीं. इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ इशू एट दैट टाइम it is the responsibility of the parents to take the child for medical observation. तो उस वक्त बच्चे को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लेना है. फॉर इंस्टेंस, अगर बच्चे के आंखों में ज़्यादा पानी जमा होता है या एक्सेसिव टीयरिंग है, so it is the indication of one of the eye defects.
दैट डिफेक्ट इज नोन एज ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा वो आई डिफेक्ट है जिसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, जिसे हम कहते हैं हाई एक्वस लेवल, वो आंखों में जमा हो जाती है, जिसकी वजह से जो आई वेन्स है उन्हें चांस होते हैं डैमेज होने के, एंड चाइल्ड हैज मैक्सिमम चांस दैट टू बिकम विजुअली इंपेयर्ड। वो टोटली ब्लाइंड भी बन सकता है अगर विजन कंप्लीटली यानी कि लॉस हो गया ड्यू टू द कंप्लीट डैमेज ऑफ आई वेन्स, स्पेशली द ऑप्टिक नर्व। इसी तरह से अगर बच्चा जो है वो कंटिन्यूअसली अपनी आंखों को रब करता है, आई मीन टू से यू चाइल्ड इज कंटिन्यूअसली रबिंग वन्स आइज, तो पेरेंट्स को जानना चाहिए बच्चे के साथ कोई सीरियस इशू है रिलेटेड टू द आई साइट, तो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बच्चे को ले जाओ, या बच्चा सही तरीके से चीज़ों को ट्रैक नहीं कर पाता है। दीज आर द वेरियस साइंस फॉर द विजुअल इम्पेयरमेंट। नंबर 4, visual acuity testing. With the help of visual acuity testing, we can also identify visually impaired children. Dear students, visual acuity testing में बच्चे को आई चार्ट दिया जाता है और उसमें बच्चे का विजन चेक किया जाता है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स बच्चे को दिखाई दिए जाते हैं। अगर बच्चे ने नॉर्मल डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट्स को परसीव किया, डिफरेंट लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स को परसीव किया, इट मीन्स चाइल्ड डज नॉट पॉजेस एनी इशू रिलेटेड टू द आई साइट। लेकिन अगर बच्चा चीज़ों को नहीं देख पाया एट नॉर्मल डिस्टेंस, सो इट इज़ द इंडिकेशन फॉर द विजुअल इम्पेयरमेंट। तो नटशल में हम कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फील्ड्स ऑफ विजन हम बच्चे का आई साइट जान सकते हैं। देयर वॉज वन ऑफ द फेमस डॉक्टर नेमली डॉक्टर सिनेल, और उसने आई चार्ट दिया है दैट इज नोन एज सिनेलियन आई चार्ट, और उससे फील्ड्स ऑफ विजन के बारे में जान सकते हैं या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि जो चाइल्ड है वो किस लेवल में फॉल होता है। चाइल्ड में माइल्ड लेवल ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट है, मॉडरेट लेवल ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट है, सिवियर लेवल ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट है, या प्रोफाउंड लॉस है। एज वी नो दैट माइल्ड लेवल में बच्चे की विजुअल एक्यूटी होती है 6/9 या 6/12। मॉडरेट लेवल में बच्चे की विजुअल एक्यूटी होती है 6/24। सिवियर लेवल में बच्चे की विजुअल एक्यूटी होती है 6/60, और लास्ट लेवल जो है दैट इज नोन एज प्रोफाउंड लेवल, विच इज़ वेरी मच डेंजरस। ये वो लेवल है जिसमें बच्चे का कंप्लीट विजन लॉस हो चुका होगा। सो दोज चिल्ड्रन आर आल्सो कॉल्ड टोटली ब्लाइंड और थ्रोली ब्लाइंड। नंबर 5, कलर विजन टेस्टिंग। विद द हेल्प ऑफ कलर विजन टेस्टिंग वी कैन आल्सो आइडेंटिफाई visually impaired children. Dear students, color vision testing is that testing in which we examine or observe whether the child is able to distinguish or differentiate between various colors or not. बच्चे को various colors दिए जाते हैं such as red color, black color, green color, blue color. अगर बच्चे ने colors को पहचान लिया, difference कर पाया, तो हम कह सकते हैं बच्चे में कोई विजन की प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ द चाइल्ड फेल्स टू डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश वेरियस कलर्स, देन डेफिनेटली चाइल्ड हैज इशू ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। देयर इज वन ऑफ द आई डिफेक्ट दैट इज नोन एज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस वो आई डिफेक्ट है इन विच द चाइल्ड फेल्स टू डिस्टिंग्विश और डिफरेंशिएट बिटवीन द कलर्स। वो कलर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, वो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज नहीं ढूंढ पाता है। और ऐसा क्वेश्चन नेट में पूछा भी गया है और ये पूछ भी सकता है। नंबर 6, लाइट सेंसिटिविटी टेस्टिंग। डियर स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ लाइट बच्चे का आई एग्जामिनेशन किया जाता है। सिंपली बच्चे की आंखों पे नॉर्मल लाइट डाली जाती है। अगर बच्चे में आई इरिटेशन हो गई, बच्चे की आंखों में पेन हो गई, बच्चे ने अपनी आंखों को बंद किया, सो दीज आर द साइंस ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट।
देन वी कैन से दैट कोई ना कोई आई इशू बच्चे के साथ है, चाहे हम आर्टिफिशियल लाइट डालेंगे, सनलाइट डालेंगे या कोई और लाइट का जरिया होगा. सो दिस टेस्टिंग इज नोन एज लाइट सेंसिटिविटी टेस्टिंग. लाइट सेंसिटिविटी टेस्टिंग के जरिए हम पता कर सकते हैं या सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर द चाइल्ड इज नॉर्मल और वेदर द चाइल्ड हैज एनी आई इशू. डियर स्टूडेंट्स, photophobia is that very eye defect in which the child shows intolerance to the light. अगर बच्चे के आंखों पे नॉर्मल लाइट भी डालेंगे, अगर इसमें फोटोफोबिया है, वो अपनी आंखों को बंद कर लेगा, उसके आंखों में पेन महसूस होगी, बच्चे के आंखों में इरिटेशन महसूस होगी या सिंपली बच्चा जो है वो डिस्कम्फर्टेबल महसूस करेगा. These were the various assessment techniques by which we can identify visually impaired children. This was all about the today's lecture. If you really enjoyed my lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.